Shweta or Abdullah, but I'm saying also to Kiran and Samar. So you all have to be a little bit more hardworking right now for the boards. Okay. Yes, sir. Okay, that's great. Just allow. So थोड़ा सा आप लोग focus करो अब like Shweta, was the paper hard of the science? Yes, sir. The first report was a bit hard, but the Hmm. comment report was good. But I don't know, I lost marks in chemistry. You lost marks in chemistry. Chemistry में किस portion में बचे? Chemistry में वो carbon and its compounds, ओ थोड़ा सा or लो. esterification and all हम्म that was the part. ठीक है बट कोई नहीं. Prepare again. Assume that you are going to sit in Yes, the sir. paper again. So okay, everybody, थोड़ा सा अपना जो है आप लोग अब सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो. इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द सॉल्विंग ऑफ सैम्पल पेपर्स. क्लियर है? Yes, sir. चलो, Yes, दैट्स sir. ग्रेट. ग्रेट. ओके, सो फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए थे आपने? करिश्मा, did you solve all the numericals of physics in the question paper? Yes, sir. Like, yeah, I was हम्म able to. okay. न्यूमेरिकल्स कोई कंसेप्चुअल पार्ट में कहीं पे कोई डाउट? No, sir. It was ठीक है, fine. that's Physics was good. fine. Physics was fine. Okay, that's good. It's good to hear that you are able to solve the physics part. So you have to be a little bit more focused towards chemistry if you are a little bit more weak in the chemistry portion. So okay, so I think somebody has joined. Hi Karishma, how are you? Hi, sir. I'm good. What about you? I'm fine, dear. Thank you so much for asking. Okay, so let's start the class. Okay, so let's start the class with the चलो ये dispersion of light ये topic में मैं start कर देता हूँ. So basically the topic which we are going to start is the refraction through prism. Okay, refraction of light by a prism glass. ठीक है? So basically what happens is that, so first understand what happens. It's a very small concept, only 15 to 20 minutes concept it is. Okay, so assume that this is a prism. So prism is in a triangular shape, yes or no? Let me know once. How many of you have seen the prism? किस किसने prism देखा है? बोलो. Yes, sir, I I have did. seen it. Okay, Karishma has seen it. What about rest of you? Yes, sir. So prism is a kind of triangular shape, is in the triangular shape. So इससे light refract वगैरह होती है, ठीक है? So when I was in 12th, first time मैंने prism 12th class में देखा था, क्योंकि 10th class में तो prism वगैरह like हमारे experiment नहीं होते. But when I was in 12th, ray optics से बहुत डिटेल में आपका ये चैप्टर बहुत डिटेल में है. तो आपको माइक्रोस्कोप क्या कहते हैं, और दूसरी आपको टेलीस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सब चीज़ों के बारे में, रे डायग्राम, ये सब पढ़ना होगा. सो दैट इज इन वेरी डिटेल. इसका आप समझ लो 4 टाइम्स है वो चैप्टर. ये तो आपको कुछ भी नहीं है. 4 टाइम और 5 टाइम्स है. सो उसमें आपको प्रिज्म की डिटेल और डेरिवेशन होती है. एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है? सो लेट्स अभी तो नहीं है आपका, बेसिकली आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है. सो सपोज दैट थिंग, द लाइट रे incident on a prism glass is like this. ठीक है? Clear? So if you basically make a normal to it, it will be like this, yes or no? Sorry, normal is like this. This is the normal. Clear? Now if this is the air, the medium 1 is air and medium 2 is glass, so it will refract, yes or no? Where will it refract? Towards the glass or away from, basically towards the normal or away from the normal? It will basically refracts towards the normal, because it is a denser medium. Now if the light rays goes from the rarer to denser, it will refract towards the normal. Clear?
क्लियर है? व्हाट हैपन, सब चुप क्यों हो? Yes, sir. ठीक है, एंड इफ यू ड्रॉ नॉर्मल एट दिस पॉइंट यू कैन सी दिस थिंग, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इफ यू ड्रॉ अ नॉर्मल at this point here, so you can see this thing, the light ray is going from denser to rarer, so it will move away from the normal, yes or no? So it will be like this, clear? So this is the angle of incidence, this is the angle of incidence, ठीक है, and this is the angle of refract refraction 1, okay, and this is the angle again, देखो ये जितना है ये भी उतना ही होगा, why? Because लाइन स्ट्रेट लाइन हो रही है, इसी एंगल के साथ इंसिडेंट कर रहा है ये, yes or no? So ये आपका R1 ही होता है, and this angle is emergence, clear? This is incident ray, and second the ray coming out is emergent ray, ठीक है, and this is refracted ray, clear? Inside one, and this is a glass prism, the glass prism, clear है? सो आपको इतना डिटेल में नहीं, बट जस्ट मुझे आइडिया देना था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब आपके सिलेबस में, जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं, जस्ट आपके एक फिगर बनी हुई है, सो यू हैव टू बी लिटिल बिट, ओके, यस और नो? क्या हुआ यार, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हो, अभी 5 स्टूडेंट्स आर देयर इन माय क्लास एंड नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, Sir, यस करिश्मा? So if you extend this line in the straighter path, so the angle which is this angle, this angle is basically, this angle is called as angle of deviation. Angle of deviation means you can see this thing na, that the incident ray was going in this line, but the ray has been deviated by some angle. The actual ray path, sorry, the apparent ray path, and this is the actual, yes or no? So this thing is called as angle of deviation. So 35 degree जो होता है angle of deviation is the minimum. 35 या 37 होता है 60 डिग्री प्रिज्म के लिए, 60 डिग्री, इफ दिस इज द 60 डिग्री ना, ये जो 60 डिग्री अगर हुआ प्रिज्म आपका, तो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन निकल के आता है वो 35 या 37 होता है, लाइक आई एम नॉट, 35. हाँ 35 होता है, मैं थोड़ा 37 में कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो 35 36 के बीच में कुछ फ्लक्चुएट किया था वो. So angle of deviation, if this is 60 degrees, so your angle of deviation is coming out to be 35 degree. ये general knowledge question है, like it's not necessary कि आपको पता ही होना चाहिए, I'm just telling you, okay? Clear है? Yes, sir. Okay, that's great. Yes. So यही चीज थी इसमें, जस्ट मुझे जो एक्सप्लेन करनी थी. लेट्स टॉक अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ लाइट. व्हाट बेसिकली डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था व्हाट प्रिज्म इज, एंड उससे ही रिलेटेड डिस्पर्जन ऑफ लाइट है. सो बेसिकली व्हाट हैपन इज दैट, मैं ड्रॉ करके बताऊंगा थोड़ा सा, तो इससे थोड़ा सा आई होप दैट यू गॉट, आप मेरी बात समझ जाएंगे, ठीक है? सो इट इज लाइक दिस, देखो आपकी एक रे है, व्हाइट रे ने इंसिडेंट किया यहाँ पे. सो क्या होता है, व्हाट हैपन इज दैट अकॉर्डिंग टू दी, आपकी लाइट रे है, सो ये आपकी लाइट रे है, तो अब जो लाइट होती है अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ्स, they get split or the refractive index, ठीक है? सो आपका यहाँ पे एक लाइट हो गई, ये दूसरी लाइट हो गई, सपोज करो,
रुक जाओ यार, डायरेक्टली सिंपल वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि एरो से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यस, ठीक है। So how many lights are there in the white light? 7. 7. 7। कौन कौन सी है, किसी को याद है पैटर्न? Yes, Yes, sir. sir. I guess अच्छा, like denoted by Vibgyor. हाँ वेरी गुड, विबग्योर होता है। तो सो इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे हाई वेवलेंथ किसकी होती है, किसी को ये पता है? Sir, I guess Red. यस, red. रेड। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? Violet. वायलेट, वेरी गुड। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको 12 तक भी वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये लाइट स्प्लिट होती है। कितने हो गए, 5 हो गए ना? देखो यार, मैं बहुत कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो Yes, sir. अगर 6 है, कुछ ये 7. हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ गलत ड्रॉ हो जाए तो बता देना मुझे। ठीक है, सो ये आपकी 7 लाइट्स स्प्लिट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू दी। इसी को आप अगर आगे एक्सटेंड कर दो ना, ये चीज़ को, ये आपकी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ एक्सटेंडेड लाइट। तो आपकी ये होती है विबग्योर, और विबग्योर में होते हैं 7 कलर। सबसे हाईएस्ट जो होती है दैट इज रेड वेवलेंथ, एंड जो सबसे लोएस्ट वेवलेंथ इज दैट इज योर बेसिकली द वायलेट। Violet. ठीक है, और आपकी जो होती है येलो, आपके जो येलो और ये जो होता है ग्रीन, ये मिड वैल्यूज आती हैं आपकी। अगर आप येलो का एवरेज Blue. लोगे ना, हाँ, Blue. Red, orange, yellow. Blue नहीं. somebody is saying something, was there? So what about blue? Blue color. ब्लू, BLU. बी, बी डियर, ब्लू थोड़ा सा जो होता है आपका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, टुवर्ड्स ज्यादातर आपका वायलेट के साइड होता है वो। जो येलो Okay, अगर sir. हम देखे थे तो येलो इज द मोस्ट, यू कैन से एवरेज ऑफ द लाइट। Okay, सो sir. इस, हाँ, देखो ये सारे आपके 7 होते हैं। ठीक है, अब आप इसको डिनोट कर सकते हो। सबसे पहले आता है आपका रेड। Red, orange, yellow, यहाँ से लेते हैं, वायलेट, इंडिगो, yellow, ब्लू, ग्रीन, blue. येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। सो इट इज कॉल्ड विब गयर। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा मैप जो डेविएशन सबसे ज्यादा होती है, वो मैक्सिमम डेविएशन ये होती है वायलेट की। क्योंकि देख रहे हो आप कहाँ, ये यहाँ जा रही है और यहाँ से एंगल सबसे बड़ा किसका है, वायलेट का। एंड जो मिनिमम होती है दैट इज ऑफ रेड, लीस्ट डेविएट होती है आपके रेड, आपकी जो रेड लाइट होती है वो लीस्ट डेविएटेड रे होती है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? सो लेट्स टॉक अबाउट बेसिकली नहीं आपका sir. स्प्लिटिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज, सॉरी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज स्प्लिटिंग ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। वाइट, वाइट होगा आपका, यहाँ पे मैंने वाइट मिस कर दिया, वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ठीक है, ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। क्लियर है?
यस और नो? Yes, sir. ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेड wavelength is deviated, is least deviated, and the violet होती है and violet is most deviated. ठीक है, ये आपकी सबसे ज्यादा डेविएटेड होती है। ठीक है, और अगर इसी लाइट के आगे अगर आप प्रिज्म को, इफ यू प्लेस द प्रिज्म इन द अपवर्ड डायरेक्शन जस्ट लाइक दिस, ठीक है, सो बेसिकली व्हाट हैपन इज दैट, Upside down. हाँ अपसाइड डाउन अगर आप प्रिज्म को प्लेस करते हो तो व्हाट हैपन इज दैट बच्चों, सो योर लाइट, द आउटपुट ऑफ द लाइट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट व्हाइट लाइन। ठीक है, तो आपकी जो लाइन आती है दैट इज स्ट्रेट व्हाइट लाइन जस्ट लाइक दिस। ठीक है, रुक जाओ, ये यहाँ से ले लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, सो आपकी ये इमर्जेंट रे, ये आपकी व्हाइट लाइट है। रुको जरा यार, स्क्रीन दोबारा शेयर करनी पड़ेगी, फ्रीज हो गई स्क्रीन। समझ में आया आपको सबको? Yes, गॉट इट sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. सो दिस इज द, देखो बुक में पिक्चर भी थी बट आई थॉट कि थोड़ा सा ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज्यादा आपको ज्यादा टाइम लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा। व्हाइट लाइट, ठीक है, या अगेन दिस इज सो व्हाइट लाइट। इसमें भी न्यूटन साहब का बहुत बड़ा हाथ था। न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड इन मैथ्स, जिन्होंने कैलकुलस बनाया। आप जो आप 12th 11th 10th 11th क्लास में जाके कैलकुलस पढ़ोगे ना आप, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब, ये पूरा कैलकुले अपनी थ्योरीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने कैलकुलस कैलकुलस इन्वेंट कर दिया था न्यूटन ने। ठीक है, तो कैलकुलस उनका उसमें बहुत है। बायनॉमियल एक होता है, बायनॉमियल इज यूज इन मैथ्स, वो थोड़ा सा रिलेटेड है आपके उसके लिए, अलजेब्रा के लिए, अलजेब्रा रिलेटेड चीज है। उसमें भी उन्होंने नेगेटिव इंडेक्सेस बना दिए। तो और फिजिक्स में तो कहने क्या है, रे ऑप्टिक्स में भी इनका ये काफी कंट्रीब्यूशन है। और आपका ग्रेविटी, ये मैकेनिक्स पूरी न्यूटन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इन्वेंट की थी। तो न्यूटन हैज कंट्रीब्यूटेड इन सो मेनी फील्ड्स ऑफ साइंस। वो ऐसे टाइप के इंसान थे, मल्टी टैलेंटेड। ओके, सो दिस इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर एवरीबॉडी? कोई Yes, डाउट sir. इसमें? Nice, sir. ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो इतना ही था इसमें। ठीक है, लाइट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइट्स ऑफ 7 कलर। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट द ओके, सो So there बेसिकली, go one line up. हाँ देखो, अब ये इसका रियल, आपको जो रियल इसका फिनोमेना अगर आपको ऑब्जर्व करना है, इफ यू हैव टू ऑब्जर्व द रियल फिनोमेना ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, द रेनबो इज द परफेक्ट एग्जाम्पल. Rainbow is the perfect example of the dispersion of light, because the raindrops acts like a prism, and the and the light got splitted into 7 colors, and that's how you see the rainbow, because the raindrops are suspended into the air once the rain has stopped. Okay, some very fine droplets are there in the atmosphere, and that's how they behave like a refracted, oh, sorry, basically glass prism, and the ray got basically dispersed into 7 colors, and then the rainbow is formed. Clear? Yes, sir. Okay, so rainbow, rainbow,
The rainbow is produced by the dispersion of light, white sunlight, या वाइट ज़रूर लगा लेना, क्योंकि अगर आप सिर्फ लाइट यूज़ करोगे ना तो वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होगा. सो वाइट लाइट by raindrops is okay, by raindrops in the atmosphere. Each raindrops act as a, sometimes it can be asked in the school exam, explain how the rainbow is formed. Okay, so each raindrop, so you have to be like you have to explain the concept, the answer like this. Each, and one more thing, I've checked the copies of so many students that the thing that I basically observed the most is that many of you lack in the steps method, basically the algorithm, like how to define each steps. You are lagging in that, so you have to be very like you have to improve that portion of area while writing an answer. Okay, I've checked the copy of Kiran, I've checked Karishma's copy, I've checked yours, Shweta, as well. Okay, Abdullah, आपने तो मुझे सेंड ही नहीं की. किरण, आई थिंक किरण आप, मैंने आई हैव चेक्ड योर कॉपी, यस और नो? Yes. हाँ, सो ऑल ऑफ यू, लाइक किसी में कम किसी में ज्यादा, बट ये चीज इट्स कॉमन टू एवरीबडी. क्लियर? सो बी like you have to work on that portion of area. Okay, बिकॉज अगर आपके मार्क्स आपको फुल अचीव करने हैं, एटलीस्ट 90 प्लस लेना है, तो यू हैव टू बी वेरी गुड इन द स्टेप्स. क्लियर? आप एक किसी किसी स्टूडेंट ने 1 मार्क से क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेन किया है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन में, कि वो 5 मार्क्स का लग रहा है, और 5 मार्कर्स में आप लोग बिल्कुल ही एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो. सो दैट इज नॉट द थिंग. यू हैव टू बी एक्यूरेट इफ how much you have to define in each question. Clear? Whether it's physics, whether it is whether it's science or maths or any subject, so you have to be very precise about that. Clear? Okay, देखो इसकी पिक्चर थोड़ी सी ड्रॉ करना मुश्किल है, सो आई एम बेसिकली पेस्टिंग द पिक्चर. हाउ इज इट फॉर्म्ड? सो आप नेसेसरी नहीं है, so but if you draw in the school exams, that will be a plus point for you if the question comes. Clear? I'm pasting one because we don't have enough time to draw the very complex picture. You can see this now, like it is a very small picture and we have to draw 7 lines and then show it to the eye. So this is a picture. So आप जब एग्जाम में बनाओगे तो आपका पेंसिल वगैरह होंगे. So I don't have any proper thing. I only have the writing pad, so it's very difficult to draw this one. I hope this one is clear to everybody. How the rainbow is formed. Yes or no? So what you will say that Yes, in the sir. end, that the white light consists of 7 colors. Clear? So dispersion of light topic is done. Sir, can you show the rainbow is produced? अब्दुल्ला साहब 2 सेकेंड, मैं ये लाइन लिख लूं फिर आपको दिखाता हूँ मैं. ठीक है? ठीक है sir. 7 colored rainbow in the sky when you will go in 12th class na. So in the in the wave optics, because light has both the nature wave and particle. So when you will go in the 12th class, so you will be basically studying the nature that light has both, basically light reflect and refract at the same time. So both the phenomena हम लोग individually पढ़ रहे हैं अभी, but when you will go in 10th class, you have to study that phenomena in the mixture. Basically छोटा सा टॉपिक है वो, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए उसका सिर्फ कुछ पार्ट ही आपको वहाँ मेंशन है. ठीक है? सो when you will study that thing, so आपको मालूम चलेगा कि that light refracts and refracts at basically simultaneously. ठीक है? सो ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रख सकते हो कि एज अ नॉलेज. ठीक है? मिक्सचर ऑफ 7 colored lights.
देखो मैं ये सब चीज़ें लाइक आई एम नॉट शेयरिंग दिस फॉर द डिमोटिवेशन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप लोग ये ना कि मतलब ये डर नहीं जाना है कि सर तो पहले ही 12th क्लास की चीज़ें बता रहे हैं। तो जस्ट आई एम टेलिंग यू कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं आपके, तो अगर आपको कुछ आइडिया रहेगा तो आप जब पढ़ोगे तो उसको आपको आपको पढ़ने में यू विल गेट इंटरेस्ट, यू विल ओके। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट शेयर दीज काइंड्स ऑफ थिंग। ठीक है, am I clear to everybody? Please let me know. Dispersion of light is clear to everybody. Please let me know जल्दी से. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? No, sir. I think somebody has joined. Samina. Hi Samina. Assalamu alaikum. Where were you, dear? You have joined half an hour late. Okay. Am I clear to everybody? Please let me know जल्दी से. Yes, sir. अब्दुल्ला Yes, मैं sir. मैं ऊपर आप कर दिए। मैं चलो ठीक है, लाओ दो यार, आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी चल। से। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आई एम थिंकिंग दैट आई शुड रैप दिस टॉपिक। थोड़ा सा अगर बचेगा तो वो एक आपके एप्लीकेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चन फिर बच वो सकते सेवन हैं। कलर रेनबो, हाँ 10 कलर रेनबो दिखाते हैं। हाँ तो ये चीज आप ड्रॉ कर सकते हो इफ यू हैव टाइम इन द एग्जाम। अगर जरूरी नहीं, आई एम नॉट सेइंग मैंडेटरी, बट हाँ ये है थोड़ा सा बेसिकली मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन द टीचर। ओके क्लियर एवरीबॉडी, एम आई क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। दैट इज आई थिंक somebody has joined again. Adil. Adil and Samina, where were you, dear? It's almost half an hour. You are almost half an hour late in the class. Yes, sir, I slept. Okay. Okay. Samina? Sir, actually, I slept, sir. Okay. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. Atmospheric refraction. So, dear, you have missed the first portion of this class. Okay. So, once the recording is available, you can go through that topic. It's a very small topic and a easy one. Okay. Dispersion of light. Okay. Okay, Okay. sir. Yeah. So this is, you can assume this topic, the atmospheric refraction, is the last topic of this chapter. Okay. Atmospheric refraction means the refraction which occurs in the atmosphere due to the basically difference in the densities of the layers is called atmospheric refraction. Clear? Yes or no? yes, sir. Clear. Basically, so atmospheric refraction can be seen in various situations. First of all, twinkling of stars. Okay, so twinkling of stars is because of the basically atmospheric refraction. When you see that actually the sun is basically what happens is that when the sunset is happening, the sun actually goes below the horizon, but due to the atmospheric refraction, we are able to see the sun. Okay, that's also happen in the sunrise as well, advanced sunrise. And basically planets do not twinkle. That is also the basically due to the atmospheric refraction. Okay, so these are the some, you can say, atmospheric refraction applications. Clear? I hope am I clear to everybody? Am I clear? Yes, sir. Yes, Okay, sir. that's great. Okay, let's understand the second, the basic definition of this this topic, that is atmospheric refraction. So, atmospheric refraction, the refraction that persists or occurs in the atmosphere due to different optical density
of the different layers. Clear? Yes, sir. Is called atmospheric refraction. This chapter is very easy. It's totally theoretical based. Only 1 or 2 numericals can be there from the defects of eye. Other than this, there is no numerical. Only the conceptual types of questions are there. Okay, atmospheric refraction. So that's why I have taken this topic in the last, because this is a very simplest topic. Okay, I hope it's clear to you. Okay, so let's understand the first phenomena, that is twinkling of stars. So twinkling of stars is basically what happens is that basically this is due to the atmospheric refraction. So basically when you know this thing that the stars are very far away from the earth. Yes or no? Yes or Yes, no? Am sir. I okay? Yes, sir. So because of the distance and the different densities of the layers, what happens is that the intensity changes at each level in the इधर atmosphere. है इधर है लूसर Okay, please mute yourself. Shweta, I think it's Shweta. Please mute yourself, dear. Okay, so basically due to the difference in the optical densities and the distance between the Earth and the star is very high and very large. So because of that, we think and it changes continuously because of the atmospheric refraction. The intensity of the stars changing continuously. That seems like the stars are twinkling, but actually they are stationary. They do not twinkle. The intensity of the star is constant, but due to atmospheric refraction, the stars twinkle. This is a phenomena. This is a phenomena. Okay. Yes, sir. Am I clear? Yes, Sir, sir. can you read ठीक. this atmospheric Yes, sir. refraction? Okay. क्या हुआ अब्दुल्ला? राइटिंग समझ में नहीं आई क्या इसमें? द नहीं sir. रिफ्रैक्शन अच्छा चलो ठीक है यार, थोड़ा सा जो ना वो वेट हो गया ना राइटिंग पैड, तो इस वजह से द सर वो रिफ्रैक्शन दैट स्लीप पे लिख दीजिए ना, स्लीप पे. स्लीक में. अच्छा चलो स्लीक में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं. अब नेक्स्ट टाइम से लिख देता हूँ, अभी ये मैं बता देता हूँ. द रिफ्रैक्शन दैट परसिस्ट और अकर्स इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द different optical densities of different layers is called atmospheric refraction. In the earth ठीक है atmosphere कर लो आप लोग. earth's atmosphere. ठीक है? Clear everybody? ठीक है सर. Why this twinkling of star happens? So सबसे पहले what you will write, देखो आप, this can be a 3 marker question. So it's better to explain the questions whenever you have a 3 marker and you have to explain. Do not write a long paragraph. Always write concise lines, at least 2 or 3 points to justify your basically reason. Clear? Because paragraph is not the good thing. It basically identifies that like you don't know the proper concept, you just have made a long story about that concept. So it's better to write the concise and crisp point. So first top A point should be, you will write the phenomena twinkling of stars. And what I've observed is that most of the students, those who write in this format, got extra marks in comparison to the paragraph ones. So that's what I felt. Okay, so that's why I'm sharing this. Due to the atmospheric refraction. And even I have experimented this. When I was in 10th, I always write in terms in the very lengthy paragraphs like thing. But when I got into 11th and 12th, I write the exam answers in the point wise. So and my score increased a lot. So that's why I've also experimented this thing. So that's why it is always recommended to write the answers in the points, bullet points. Refraction of stars light. Okay. The second point, what you will write is that the continuously changing
atmosphere refracts the light from the stars. Because if you write these points, you are able to see this thing that teacher doesn't have to make any or you can say put any efforts to identify whether the concept is correct or not. Okay. So, but if you write in paragraph, so teacher has to find out which line is correct and which is not. So basically that wasted our time, and and because of that, teacher becomes irritated. The checker. I'm specifically targeting the checker, the one who will who will be checking the copies of yours. So it's better not to irritate from our answers. Okay, got it, everyone? What I'm trying to tell you? Yes, sir. Okay, Yes. always keep an eye when I'm telling these kinds of things, because these things can help you a lot to the next. So take care. So this is the third part that you will writing. The continuously changing atmosphere refracts the light from the start by different amount from one moment to the another. Okay. So that because of this, the star light continuously changing the intensity of starlight. Okay, the starlight reaching our eyes increases and decreases continuously due to atmospheric refraction. Okay, and the stars appear to be twinkle. I hope it's clear to everybody why does star twinkles. Bolo, Because Yes, clear sir. hai? it is a point source due to atmospheric refraction. Which dear? Due to atmospheric refraction, Okay, and the stars appears to twinkle at night. fluctuating. It fluctuates. It fluctuates, twinkle, and the Yeah. stars appears to twinkle. It means that fluctuate. It also happens in the day as well, but due to the high intensity of the sunlight, we are not able to observe this phenomena. But in the night, there is no sunlight, so we are able to observe this phenomena very clearly. That's why. Okay. Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay. And if somebody says that why the planets do not twinkle, because of the size. The planets are much more closer to the star, much more closer than the stars, and they have a very big size in comparison to the stars. Okay, because stars are very far from away from our galaxy or from our Earth. Okay, am I clear to everybody? Please let me know. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next is, let me write down the heading with a bold one. So next is, so if you write these 3 points, why do star twinkles? Nobody can deduct your marks at any cost for a 3 marker or a 2 marker. This cannot be a 5 marker question. It can be a question like why do stars twinkle? Why the basically stars appears to be higher than the actual? Okay, so this can be the question. So they can be a 3 marker. So you can write this in such a manner to get your marks efficiently. Clear? So देखो आपको paragraph से कम लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, but the points are very clear. So teacher is able to identify whether the concept is correct or not. That's what I'm trying to explain you. ठीक है? The stars seem higher than they actually are.
ठीक है। सो ये चीज होती है, व्हाट हैपन इज इन दिस थिंग द स्टार्स, देखो लेट मी गिव यू अ फिगर ऑफ दिस, बिकॉज इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करना ज्यादा एफिशिएंट होगा। ओके, लेट मी गिव यू अ फिगर ऑफ दिस। देखो, is this clear to everybody? Please let me know. Yes or no? Yes, sir. Okay, so this is very similar to the, you have already So seen can this you go one line above? this thing in the like if you drop a pencil into a water, the pencil appears to be higher, risen. Yes or no? If you drop a pencil Yes, sir. in a water, it seems to be that the pencil is raised above. And same thing happens is that you can see this is the actual position of the star, but due to refraction, it's our continuously bending of the light. But our eyes always see in the, you can say, in the straight direction. Yes or no? Yes, sir. Okay. So due to this, the actual position of the star is this, but due to refraction, atmospheric refraction, the stars is assuming to be at this place, which is higher than the actual place. Clear? Yes, sir. एंड दिस हैपन, देखो स्ट्रेट लाइट क्यों होती जाती है, देखो यहां से क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस इज दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, सो इट्स कॉन्टिन्यूसली बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट फ्रॉम आवर आई द लाइट इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग इन द basically from denser to rarer, so that's why it is continuously going away from the normal. So if this is going away from the normal, the actual ray will be a little bit more deflected, देखो deflected है ना, थोड़ी सी deviated है actual उससे, जो बेसिकली आपकी रिफ्रैक्टेड रे है जो जा रही है इधर की साइड, ऊपर की साइड। यस और नो? देखो लिखा है ना, इंक्रीजिंग Yes, sir. ऑप्टिकल डेंसिटी मींस अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। यस और नो? देखो एक्चुअली यहाँ जानी Yes, चाहिए थी ना sir. रे, बट जा कहाँ रही है, ऐसे तो यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल है, बट यहाँ पे इन दिस पार्ट द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट मीन्स दैट the basically the refracted ray will go away from the normal due to the lower density, because देखो आप डेंसर से रेयर जाते तो रे कहाँ जाती है, अगर ये रेयर डेंसर है और ये रेयर है और ये आपका वो है तो कहाँ ऐसे जाएगी ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ज्यादा Yes, होगा। sir. अगर आपका ये यहाँ पे ये रेयर है और ये डेंसर है तो ये अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो डिफरेंस है ना देखो। सो एक रे में तो हो रहा है आपका डेंसर टू रेयर, ये वाले में सॉरी, ये तो हो रहा है रेयर से डेंसर, और ये वाले में हो रहा है डेंसर टू रेयरर, दैट्स व्हाई द stars appears to be higher. Am I clear to everybody? Please let me know. yes or no बोलो। Yes, ठीक है, आप इस टाइप का एक एग्जाम्पल दे सकते हो स्कूल में, लाइक इन द एग्जाम्स। ठीक है, इजी सा ये तो एग्जाम्पल आप ड्रॉ कर सकते हो आराम से। ठीक है, सो आप इस चीज को याद रखना। ठीक है, सो अगेन आपका सबसे पहला पॉइंट होगा व्हाई दिस इज हैपन, द स्टार्स seem higher than they actually are. सबको समझ में आया एवरीबडी? प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? yes, sir. एनी डाउट? No, sir. श्योर? ओनली आदिल इज रिस्पॉन्डिंग, व्हाट अबाउट अब्दुल्ला, करिश्मा, हिबा, oh sorry, किरण, समर, समीना, श्वेता, all of you are there, you are also responsible to respond me. Yes, sir. ठीक है, एक्चुअली आर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, what's in the second point you will write that light from a star, because light coming from a star is refracting continuously, light from a star is refracted
as it leaves the space and enters in Earth atmosphere. अरे यार, जस्ट अ मोमेंट यार, फ्रीज हो गया फिर से. Atmosphere. Earth atmosphere. Okay. सो यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो रही है डेंसिटी जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं. ओके. सो द लाइट फ्रॉम अ स्टार comes down. ठीक है. The dense air bends it more, bends the light more. Okay. So in the C part, you will write due to this refraction of star's light, okay, the stars appears to be at higher position. Clear it, everybody? Yes, sir. Any doubt? Sir. No, sir. Sure. Yes, sir. Very good. So these are the 3 points. Last point of this last phenomenon of this is advanced sunrise and delayed sunset. Why this happens? So let's find it out. And delayed sunset. तो ये आपका ये थोड़ा सा ठीक है, क्लियर है. सो इसकी मैं फिगर आपको दिखा देता हूँ. सो हमारा ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी डन हो जाएगा. सो सिर्फ एक 15 मिनट्स का टॉपिक बच रहा है, तो वो आई होप दैट आई विल ट्राई टू शेड्यूल द क्लास, लास्ट क्लास related to that topic, that is scattering of light, कि why this sky appears to be blue instead of any other color. this ये वाला एक क्वेश्चन आता है आपका, उससे एक टिंडल इफेक्ट होता है. तो ये छोटे से उसके 2 माइनर टॉपिक्स हैं. ठीक है. that is the only topic that will be left. Clear everybody? Why the sky is blue and the why the sky is red at the sunset or sunrise. ये 2 आपके वो होते हैं. ठीक है. सो इस वाले को फाइंड आउट करते हैं कि आपका ये क्यों होता है एडवांस सनराइज और एडवांस सनसेट. हाउ डू वी फाइंड आउट? सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट आपका यही रहेगा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट is due to the, so you can see na, this is the horizon. Basically horizon is the line which basically separates the sky and the earth, okay, from our point of view. Okay, so but actual position of the star, basically of the earth is, oh sorry, of the sun is below the horizon, but due to our eye, the eye which sees that, it sees in the straight line. Okay, it sees this thing that the sun is above the horizon. That's why we are able to see the
the delayed sunset. Clear? Same goes with the actual sunrise as well. The sun is basically below the horizon, but due to the atmospheric refraction, we are able to see the sun. Am I clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. देखो यस सर आप लोग बोलते हो, आप लोगों को एक्चुअली में समझ में आता भी है या नहीं, ये बताओ आप लोग ऑनेस्टली मुझे। यस सर, समझ में आता है ना? ठीक है, क्योंकि जी देखो सर। आप लोग बोलते हो यस सर, दैट्स व्हाई आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। इफ यू जस्ट से फॉर द सेक ऑफ माय कन्वीनियंस दैट यस सर, और लाइक डोंट डू दैट थिंग, दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। सेकंड पॉइंट इज when the sunlight is below the horizon, sorry, horizon, the sunlight coming from dense air is refracted because as the light enters in the innermost atmospheric phase, the in that region the air is most dense. ठीक है, as you go above in the as you go above in the atmosphere, the air basically density of air decreases, so that's why it is refracting towards the normal. It means that it is refracting, okay, refracted downwards as it passes through the atmosphere. Clear everybody? So because of this, Yes, sir. we are able to identify this advanced and delayed sunrise and sunset. The sun. So सेम एक ही कॉन्सेप्ट दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है, दैट इज एडवांस सनराइज और एडवांस सनसेट। ठीक है, appears to be raised above the horizon. When it is slightly below the horizon. I hope that you got my point of all the three conceptual questions below the horizon. Please let me know, am I clear to everybody, yes or no? Yes, sir. ठीक है, so in third point will be, it is basically we can still see the sun for about 2 minutes
आफ्टर एंड बिफोर द सनराइज, ठीक है। Yes, sir. 2 minutes after, even after the sunset has set below the horizon. Sun horizon, ठीक है। सो आपका जो टाइम होता है, थर्ड फोर्थ पॉइंट, ये थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप ये चीज और इंक्लूड कर सकते हो। जो टाइम होता है आपका, द टाइम बेसिकली लेंथेंड by 4 minutes because of atmospheric refraction. The time from sunrise to sunset is at lengthened, मतलब it increases, ठीक है, by about, same goes with, okay, by about 2 plus 2 is equals to 4 minutes, okay, because of atmospheric refraction. Is this clear to everybody? Please let me know. Yes, sir. Any doubt to anybody, please let me know once. No, sir. Sure. No, sir. Galvin Yes. and Simrat, both of you, please wait for a while, dear. I'm just starting, okay? Yes, sir. Okay, so first topic that we have covered is the dispersion of light, okay? So dispersion of light means splitting of light into basically splitting of white light into 7 colors, clear? And the second topic that we have covered is the atmospheric refraction, which is the real phenomena, okay? Because basically it happens because of the Earth atmosphere, the difference in the optical densities of the different layers. First phenomena is twinkling of star. Second phenomena is the stars appears to be higher, and the third phenomena is the advanced sunrise and delayed sunset. Am I clear to everybody? Please let me know. Yes. Okay. Yes, sir. So, okay, that's all for this class. Then only a very small topic, only merely of 15 to 20 minutes. 50, like maximum it can be goes up to 30 minutes. Which is left is the scattering of light. I will try to wrap this topic by tomorrow. Okay, in the tomorrow's class, that is scattering of light, and in that topic, Tyndall effect is there, and the why the sun is blue in this like in the morning, and why the sun is you can say red at the sunrise on like when the sun is rising and the one sun is setting, ठीक है। So ये दो टॉपिक है छोटे छोटे से, so and the chapter will be done. I've